Sunrisers Hyderabad बना चुकी है 5 wins and 5 at the Wankhede Stadium against the mighty or not so mighty right now Mumbai Indians. Bhai, Wankhede was lit up, but for the wrong reasons. It had orange jerseys in it as well this time around, which was काफी shocking for me. But यार जिस तरीके Sunrisers chased down the score, 243 पे गाड़ी अटकी Mumbai Indians की. Going back to back, Mumbai Indians won the toss, decided to bat first on a due एक्सपेक्टेड विकेट विच बहुत अनएक्सपेक्टेड था. ऑब्वियसली अगर आप स्टेटिस्टिकली देखो तो यार बैटिंग फर्स्ट वाली टीम थोड़े ज्यादा जीते हैं. हाल में आरसीबी की में भी आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करी थी और मुंबई को मारी थी. चेन्नई सुपर किंग्स एज वेल दे बीट मुंबई इंडियंस बैटिंग फर्स्ट. वो वाले डायलॉग डिलीवरी पे शायद हार्दिक पांडे समझे भाई आई विल गो एंड बैट फर्स्ट. My captain Pat Cummins said कि भाई we will decide. We always wanted to bowl first. It's good for us. पावर प्ले में अगर आप देखो यार रायन रिकल्टन मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी साउथ अफ्रीकन दैट कम्स इनटू द मुंबई इंडियंस काफी गिराक होता है. क्यूडीके, रायन रिकल्टन, दीज गाइस हैव बीन एक्सेप्शनल प्लेयर्स फॉर द मुंबई इंडियंस. अगर आप देखो पावर प्ले में दोनों ने मिला के रिकल्टन आज खेला था, नॉट क्यूडीके. विल जैक्स टीम में आ गए थे. विल जैक्स ओपन विद रिकल्टन, बहुत ही अच्छा 78 का पावर प्ले करे उनला. Will Jacks hit an incredible 45 or 24. Ryan Nicholton 46 of 22. Ryan Nicholton 123 of 55. Strike rate of 223. इनक्रेडिबल सिचुएशन चल रहा था हम लोग का. ऐसा लग रहा है यार मुंबई इंडियन 93 100 पहुंच जाएंगे इन द 7th ओवर. देन द विकेट केम ऑफ विल जैक्स. नीतीश कुमार रेड्डी विद द वेरी फर्स्ट बॉल उनका, he managed to get an edge of Will Jacks and in bringing Surya Kumar Yadav. Surya Kumar Yadav again भाई कंटिन्यूस प्रॉब्लम में चल रहे. सूर्या का च्विंगम नहीं पूरा मॉइस्ट हो रहा जब तक वो वापस चल जा रहे डगआउट में. ये काफी जोक्स हम नजर आ रहे हैं इंटरनेट पे. अब ये काफी सीरियस हो चुके हैं यार. सूर्या कुमार एज द कैप्टन ऑफ द T20, इट डज नॉट लुक गुड. इट डज नॉट लुक गुड. योर इनिंग्स आर नॉट लुकिंग वेल. आपकी शॉट सिलेक्शन पोर है. आप वही लेग साइड पे खेल रहे हैं. आप एक ऑफ साइड पे you can just cut it. That's all you're able to do right now. You're in a very, very, very bad situation if I'm looking at it. As an Indian captain as well, but also a player of Mumbai Indians. आपकी टीम पे कॉन्फिडेंस I don't know अगर ड्रॉप करेंगे या नहीं इसको, लेकिन अभी भी थिंग इज फिर प्रफुल इंगे पावर प्ले में काफी पिट गए थे, काफी सीरियस वगैरह. बट टुवर्ड्स द एंड एक अच्छा ओवर आया था. तो अभी भी उनके फिगर्स काफी एक्सपेंसिव है. द राजस्थान गेम जो फर्स्ट हुआ था हैदराबाद में, वहां पे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्टार्ट करे थे, लेकिन थोड़े लास्ट 2 मैचेस में इफ आई एम नोटिसिंग प्रफुल इंगे यार पावर प्ले में बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होती. बट इन द ओवर्स आफ्टर द पावर प्ले अगर आप देखो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइन वेरिएट करके पिचअप करते हैं. तो थोड़ा है वहां पे, देयर इज अ बिट ऑफ बिलीव कि ही कैन गेट बैक. Then came in obviously Rickleton was still on the crease. Namandeer चले गए थे. Hardik Pandya gave a good cameo, 31 of 15. Saqib Hussain picked up his wicket. Pat Cummins, again I have to credit Pat Cummins winning the toss in the first game. Second game, he got us the chase. The third game, like Travis Head, man, he got him back into the form. This was second game in command for Pat Cummins, and I'm so happy that he's in this category. 243 under Ishan Kishan. I don't know if it would have been easily chased like that, but the calmness that he maintained through the whole 20 overs of the Mumbai Indians. With the ball 2 overs में 22 दे दिए. First over में 6 दिए थे. Second over में उनके 16 रन मारे थे. थोड़ा लोग बोले यार पैट कमिंस, बट द वे ही यूटिलाइजेस हिमसेल्फ, जिस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करता, अपना इस्तेमाल करता, एक मिडिल ओवर में डालता, फिर एक डेथ ओवर में डालता, फिर फंसा देता. 4 overs again 39 for him. Looks expensive, but again the first 2 majority runs that came were 22 in the power play. Post that he only gave 17 runs, and that we'll take any day. ईशान मलिंगा के बारे में बात करते हैं भाई. I am in love with this bowler right now. 4 overs 29 runs, but in the last over he पिटा वो. Apart from that, bro, 3 overs 11 या कुछ था या 18 कुछ था. He's been an exceptional bowler. Slower variations, the slower bouncers, the Yorkers. भाई ये बंदा has made everyone love it and fall in love with him, even as an opposition. मलिंगा आज था, लसित मलिंगा था, and people are saying that this guy might replace him. Again, बड़ी बात से तोबा. I really enjoy Ishan Malinga this IPL year. Last year I saw sparks of goodness in him, but this year he's just been great for the Sunrisers Hyderabad. Apart from that, अगर आप देखो यार बैटिंग में, apart from Rickleton, it was probably Will Jacks. Then it was 243 again at Wankhede. Due factor possible. We as SRH fans, I felt कि भाई चेस पॉसिबल, बट देखो डर का माहौल ऑब्वियसली था कि वो लॉ ऑफ एवरेजेस 10 चीजें आपके अंदर किक इन होते हैं. बट जिस तरीके से अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड चले, और ट्रैविस हेड अगेन he rode his luck, you can say at times. Namandeer का कैच हो गया या वो एज जो बुमराह का था, but Travis Head getting a 50 and going on to make 76 of 30. This is what Sunrisers Hyderabad need, man. They need Travis Head. They need Abhishek Sharma to fire.
fire and fire. They fired 92 runs in the power play. By 92 runs in the power play between Abhishek Sharma and Travis Head, known as Travis Sheikh. They shook up the world right now. And the first wicket falling on 129 partnership. And then again ईशान किशन, काफी लोग बोलेंगे यार मुंबई इंडियंस के अगेन इनको क्या हो जाता है, इनसाइड एज लगी उनको अनफॉर्चुनेटली ऑन अल्लाह गजनफर ball. Allah Ghaznfar was probably one of the better bowlers apart from the last over, but he managed to pick up 2 wickets, one of Abhishek, जहाँ पे थोड़ा घुरमगारी हुई. अभिषेक बोला क्या हुआ बेटे, देख कुछ वर्ड एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन they did exchange eyesights. Ishan Kishan, again like you said, unfortunate today, didn't get any kind of runs, but I'm not going to read too much into it. Obviously Mumbai Indians और उनका ongoing joke चलता है, but again Henrik Larsson, man, this guy is absolutely great. 23 crores का इक्विटी है, इसको बुढ़ा हो गया, उसको मारने नहीं आ रहा, उसकी स्ट्राइक रेट नहीं आ रही, फलाना टिप का ऑरेंज कैप कंटेंशन में नंबर 2 पे हो गया भाई. This guy is absolutely great. 65 of 13 today, he hit 4 sixes, covers के ऊपर, on side के ऊपर, he's been absolutely amazing. 7 boundaries. Henrik Larsson, man, I love this guy so much. An amazing partnership with Nitish Kumar Reddy. थोड़ा stability दे दिया after Ishan Kishan, Travis Head's wicket. They managed to get a good partnership between each other. Both of them controlled the tempo of the game. Nitish Kumar Reddy भी बहुत ही अच्छा खेले आज. He batted well before he got out. I mean, he batted slow because he was more giving into a shoulder to Klaasen, because Klaasen was the one who was aggressing. And then finally Nitish Kumar Reddy got out by Bolt, but then in came Salil Arora. भाई मैं बोल रहा हूँ पंजाब का मुंडा अलग है, अभिषेक के अंडर खेलता है. 30 ball 10 striking at a 300, सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड भी लेके चले गया. 360s, 2 boundaries, finished the game, didn't give Mumbai any kind of a hope or luck. In the 18.4 ओवर में चेस हो गया था at the वानखेड़े. ट्रेंट बोल्ट का अगर फिगर देखो 4 for 41. He's 38 years old. It looks like Trent Bolt may have to leave the Mumbai Indians camp now in the coming future. Jasprit Bumrah 4 overs 54. Jasprit Bumrah को मारे भाई. Like Jasprit Bumrah का figures अगर आप देखो, we're talking about the greatest Indian bowler or one of the greatest Indian bowlers in the world. Jasprit Bumrah को मार के पछाड़ दिए. And that also, like Klaasen के अलावा, like Travis Head, Abhishek Sharma, they all went after Bumrah right now. Bumrah is looking very, very, very done with Mumbai Indians. I think, I don't know if he'll keep himself in the auction or not. Salil Arora ने भी मारा यार Bumrah को, I think. So it's been not the greatest for thing. Salil Arora came and hit a 6 of Bumrah. Bumrah के ऐसा लग रहा है कि with every day passing, he's not interested in this franchise anymore. He's not happy either. He's not happy with the captain. Again, when coming back to the captaincy, यार Hardik Pandya winning the toss on a dew infected wicket, which will be impacted later on. आप कैसा लोगे यार? आप कैसा batting लोगे? Like again, I understand the odds of what happened, but you've got to back what's in front of you. I understand Sunrisers की strength batting है, but look like a very horrendous call. 243 के बाद भी ऐसा डर नहीं लग रहा था कि भाई अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड नहीं चेस करेंगे. We always very confident. So right now, if you look at the table, Sunrisers in the top 3. They're third right now, 12 points. 0.8. Mumbai Indians has slotted down to the ninth spot, 4 points, and negative 7.8 for. I think the season is done for Mumbai Indians. For Sunrisers again, it's on and about. They've still got a couple of games. They've got Bangalore at home. In Hyderabad, they've got Punjab, KKR at home. They've got to go to Chennai in Gujarat. So there are a few good games over there. I think 3 out of the next couple would make sure that we get into the qualification. I think 3 victories on the trot would be a good sign for the Sunrisers Hyderabad to qualify themselves. But man of the match again was Henrik Larsson for his antic 65 of 30. Brilliant stuff from him. Abhishek Sharma becomes the orange cap again. And it is something that we didn't expect in the Wankhede to go out like that. But I think everybody थोड़ा डरे हुए थे कि भाई अगर वानखेड़े में जीत गए मुंबई, so they might sniff some kind of a opportunity into the top 4. But Sunrisers closing it up. Happy that Sunrisers has got 5 on the 5. Now we move on to the next one, back at home against KKR. Let's see what happens. Tomorrow is RCB versus Gujarat Titans. I will be here. Mustafa Bhai will be here. Maybe Muksh Bhai will be here. Make sure you join us in the next one on Chasing Trophies. Till then, good night and take care.